इम्प्लीमेंटेशन एक ऐसी चीज है जो कैश फ्लो को डिसाइसिवली समझ सकता है, पढ़ सकता है और किसी भी लेंडर को उसको उसके बेसिस पे राइट क्रेडिट देने के लिए वो इनेबल कर सकता है। तो मेरे ख्याल से इस पूरे बजट में ये ओपन क्रेडिट क्रेडिट डेमोक्रेटाइजेशन की बहुत जरूरत है। वक्त आ गया है कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी हो। अगर किसी भी इकोनॉमी को एक सर्टेन रेट पे ग्रो करना है तो क्रेडिट को उसके एटलीस्ट 2 टाइम्स ग्रो करना होता है। इंडिया में भी क्रेडिट 14% से ग्रो कर रहा है, बट अगेन एसएमई में उतना पेनिट्रेशन नहीं रहा है। और इसीलिए जो मिडिल वेयर है, सो ऐसा मिडिल वेयर एम्बेडेड फाइनेंस का जो वो फाइनेंस अवेलेबल करा सकता है एट द पॉइंट ऑफ ट्रांजैक्शन या फिर एसएमईज को, एक नए किस्म की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं। क्योंकि एसएमई जो है और जो मिडिल इनकम ग्रुप है उसमें एक्सप्लोसिव इंपैक्ट आ सकता है अगर क्रेडिट वहां पे डेमोक्रेटाइज करा जाए तो। जी बिल्कुल। वहां पे डेमोक्रेटाइज करा जाए तो। जी बिल्कुल। डॉक्टर विवेक, एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्लाइमेट से जुड़ा हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि क्लाइमेट रिस्क जो है वो लगातार बढ़ रहा है और इसके संकेत हमें मिल रहे हैं हर मौसम में। तो इस बजट में किसान के लिए रिस्क कवर की बात अगर हम करें, रेजिलियंस को मजबूती देने की बात करें, तो वो कौन से 3 ऐसे संकेत होंगे जो आप चाहेंगे ताकि जो हमारे किसान हैं उनका जो क्लाइमेट रिस्क कवर है वो ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित हो सके? देखिए, एक विषय तो ऐसा है जिस पर सरकार ने पहले ही कदम उठाया है। विकसित भारत जी राम जी में जो 4 डायमेंशंस लिए गए हैं उन पर काम होना है, उसमें क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है ग्रामीण क्षेत्रों में। तो ऑलरेडी एक कदम सरकार उठा चुकी है। दूसरा, मुझे लगता है कि जो कॉमन रिसोर्स पूल पर जो काम हो रहा है उस विषय में सरकार और आगे बढ़ेगी, चाहे वो तालाबों की योजना हो, अमृत सरोवर योजना, या हर गांव में जो तालाबों का शुद्धिकरण की बात है, तो उस तरह की योजना पर फोकस अवश्य रहेगा इस बजट में। और तीसरा जो विषय मुझे लगता है कि बहुत तेजी से सरकार ने उस पर काम किया है, टेक्नोलॉजी का यूज करके जो डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, तो वो एक विषय ऐसा है जिसमें वनरेबिलिटी और उस पूरे विषय में एआई के माध्यम से हर घर को मार्क करना, उनकी केरल में इस तरह का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल कुटुंबश्री योजना के माध्यम से हुआ कि हर परिवार को, हर वनरेबल परिवार को टारगेट करके उसको स्किलिंग करना, उसके समस्याओं का निवारण करना। तो उसी दिशा में, उस दिशा में भी मुझे लगता है कि सरकार आगे बढ़ेगी। ऑलरेडी लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन लगभग 96% सा शायद हुआ है। तो और उनके उसमें शायद 40% लैंड एसेट्स को यूआईडी भी दिया गया है, ऐसा मेरी यूआईडी भी दिया गया है, ऐसा मेरी जानकारी में एक बात और है विवेक जी कि जहां पर युवाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है वहां पर वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। मैं देख रहा था यहाँ सहारनपुर में एक चकवाली गांव है, वहां की खबर मैं देख रहा था। एक लड़के ने, जो अपने गांव का प्रधान है, उसने सब गांव के लोगों को साथ में लेकर अपने गांव के अंदर भारत सरोवर बनाया। और फिर मैं उसे खुद देखने के लिए गया, देखा तो ऊपर ड्रोन से उसकी पिक्चर्स ली गई। तो पूरा जो एक तालाब है उसको खोदा इस तरीके से गया है कि भारत बन जाता है, फिर उसमें पानी भर दिया गया और वो भारत भी अखंड भारत जैसा। तो ये जो उनका वो है, एक तरह से इस कैलिबर या इस कैपेसिटी या इस विजन के साथ जो ये लड़के लोग काम कर रहे हैं, इसको लेकिन उनके मन में रहता है कि हाँ, कहीं हमें एक्सपोजर मिले, कहीं हमें जगह मिले, कहीं हमें, और सबकी इच्छा ये रहती है कि हमारे काम को पीएम अपने मन की बात में भी रख दें, लेकिन ये सब संभव नहीं हो पाता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो बड़े लोग हैं उन्हें अपनी मन की बात जो है वो वहां इस तरह का कुछ प्लेटफॉर्म शायद होना चाहिए। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और इस विषय पर आईआईटी जैसे संस्थान वो काफी बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। ऐसे ग्रास रूट इनोवेटर्स, हम जानते हैं कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ऐसे ग्रास रूट इनोवेटर्स को सामने लेकर आता है, लेकिन देश भर में एनआईटीज और एनआईटीज जैसे संस्थान है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं,
इन सभी संस्थानों को ऐसे कामों को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसे मेलों का आयोजन करना चाहिए, ग्रासरूट इनोवेटर्स को प्लेटफॉर्म देना चाहिए जी। और साथ में जिन किसानों ने प्रयोग किए हैं या जैसे जो छोटे कुटीर उद्योगों ने कुछ अच्छी केस स्टडीज प्रस्तुत की है, उन सबको सामने लाना चाहिए। तो ये प्लेटफॉर्म मुझे लगता है कि हर प्लेटफॉर्म सरकार के द्वारा डायरेक्ट दिया जाए उतना संभव शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, टेक इंस्टीट्यूशंस हैं या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, उनको इस तरह के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने चाहिए। जी बिल्कुल। और अपने दर्शकों को बता दें, और जैसा कि सुभमय भट्टाचार्य जी बता रहे थे कि संवैधानिक प्रक्रिया है, परंपरा है, और फाइनेंस बिल पास करने का जो सबसे महत्वपूर्ण जो शुरुआत है वो राष्ट्रपति से अनुमति थोड़ी देर पहले वो तक देख रहे हैं। डॉक्टर रंजीत मेहता भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मेहता, अगर उद्योग जगत की अपेक्षाओं आकांक्षाओं को समझने की कोशिश करें तो उद्योग जगत की सबसे बड़ी जरूरत है नीति स्थिरता, पॉलिसी में स्टेबिलिटी हो, जिसकी उम्मीद हमेशा उद्योग जगत करता है। अब किस तरह के लॉन्ग टर्म इंडिकेशन आपको लग रहा है कि इस साल बजट में मिल सकते हैं? और क्योंकि एक बड़ी चुनौती वैश्विक स्तर पर बनी हुई है और मंदी की जब हम बात कर रहे हैं, वैश्विक मांग में सुस्ती देखने को मिल रही है, ऐसे में उद्योग जगत इस बजट के जरिए किस तरह के प्रावधानों की उम्मीद कर रहा है? थैंक यू। इनफैक्ट जो बजट है, हम डेफिनेटली ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एक पॉपुलिज्म का बजट होगा। जो बजट होगा एक प्रायोरिटीज पे फोकस करेगा और एक सर्टेनिटी पे फोकस करेगा और कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसीज पे फोकस करेगा। आज अगर सबसे बड़ा हमारा फोकस रहेगा, डेफिनेटली सरकार ने जिस तरीके से एक फिस्कल डिसिप्लिन को, ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए, जो ग्रोथ जो है हमारे बजट का सेंट्रल पिलर होगा। अगर ग्रोथ में भी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ की हमें संभावना, और ये हमें जरूर हम कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट लेड ग्रोथ होगा, और उस पे कैसे सरकार जो है फिस्कल प्रूडेंस को ध्यान में रखते हुए सारे प्रायोरिटीज को अपने सेट करेगी। और तीन मुख्य बातों पे हमें उम्मीद है कि फोकस रहेगा, कैसे देश में कैपिटल फॉर्मेशन हो और कैसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़े, और इंफ्रास्ट्रक्चर लेड ग्रोथ पे डेफिनेटली फोकस रहने की उम्मीद है। क्योंकि जो ओवरऑल जो एम्प्लॉयमेंट जहां तक जनरेट करने की बात है, तो एम्प्लॉयमेंट आप या तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से जनरेट कर सकते हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से जनरेट कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि एमएसएमई जो इस टाइम जो ग्लोबल ऑर्डर एक चल रहा है, जो टैरिफ वॉर्स पूरे विश्व में अभी, इनफैक्ट अमेरिका का जो टैरिफ एक रहा है नीति, उसकी वजह से जो डिस्ट्रप्शन आया है, सरकार ने प्रोएक्टिव अप्रोच लेते हुए कि कैसे यूके के साथ, अभी ईयू के साथ इतना बड़ा एफटीए किया है, और ओमान के साथ, न्यूजीलैंड के साथ ये जो एफटीए करे हैं, अब इसमें जो है हमारे एमएसएमईज को किस तरीके से हैंड होल्डिंग करके नए बाजारों में उनको शुरू में डेफिनेटली। आप देखते रहिए। माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, आइटम नंबर 1,
माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। आइटम नंबर 1। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, Hindi and English versions, under Article 281 of the Constitution, Report for 2026 to 2031, Volume 1, Main Report of the 16th Finance Commission. 2. Report for 2026-2031, Volume 2, Annexures of the 16th Finance Commission. Number 3, explanatory memorandum as to the action taken on the recommendations contained in the above report. आइटम नंबर 2, माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। Honorable Speaker, sir, on the sacred occasion of Magh Purnima and the birth anniversary of Guru Ravidas, I present the budget for the year 2026-2027. Since we assumed office 12 years ago, India's economic trajectory has been marked by stability, fiscal discipline, sustained growth, and moderate inflation. This is the result of conscious choices we have made, even in times heightened uncertainty and disruption. Our government, led by Honorable Prime Minister Modi, has decisively and consistently chosen action over ambivalence, reform over rhetoric, and people over populism. We have pursued far-reaching structural reforms, fiscal prudence and monetary stability, whilst maintaining a strong thrust on public investment. Keeping Atmanirbharta as a lodestar, we have built domestic manufacturing capacity, energy security, and reduced critical import dependencies. Simultaneously, we have ensured that citizens benefit from every action of the government, undertaking reforms to support employment generation, agricultural productivity, household purchasing power, and universal services to people. These measures have delivered a high growth rate of around 7% and helped us make substantial strides in poverty reduction and improvement in the lives of our people. Today, we face an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production systems while sharply increasing demands on water, energy, and critical minerals. India will continue to take confident steps towards Vikasit Bharat, balancing ambition with inclusion. As a growing economy with expanding trade and capital needs, India must also remain deeply integrated with global markets, exporting more and attracting stable long-term investment. As I begin Part A, I want to express my gratitude to the people for standing firmly with us as we forge our way together towards becoming one of the largest economies of the world. Our aim is to transform aspiration into achievement and potential into performance as we ensure that the dividends of growth reach every farmer, the scheduled caste, the scheduled tribes, the nomads, the youth, the poor, and the women. In Vikasit Bharat Young Leaders Dialogue 2026, several innovative ideas were shared with our Prime Minister, which have inspired many of the proposals
making this a unique Yuva Shakti-driven budget. Our government's sankalp is to focus on our poor, underprivileged, and the disadvantaged. To deliver on this sankalp, and given that this is the first budget prepared in Kartavya Bhavan, we are inspired by three Kartavya. Our first Kartavya is to accelerate and sustain economic growth by enhancing productivity and competitiveness and building resilience to volatile global dynamics. Our second Kartavya is to fulfill aspirations of our people and build their capacity, making them strong partners in India's path to prosperity. Our third Kartavya, aligned with our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas, is to ensure that every family, community, region, and sector has access to resources, amenities, and opportunities for meaningful participation. This threefold approach requires a supportive ecosystem. The first requirement is to sustain the momentum of structural reforms, continuous, adaptive, and forward-looking. Second, a robust and resilient financial sector is central to mobilizing savings, allocating capital efficiently, and managing risks. Third, cutting-edge technologies, including AI applications, can serve us as force multipliers for better governance. Reform Express. Our government has undertaken comprehensive reforms towards creating employment, boosting productivity, and accelerating growth. After the Prime Minister's announcement on Independence Day in 2025, over 350 reforms have been rolled out. This includes GST simplification, notification of labor codes, and rationalization of mandatory quality control orders. High-level committees have been formed, and in parallel, the central government is working with the state governments on deregulation and reducing compliance requirements. The Reform Express is well on its way and will maintain its momentum to help us fulfill our Kartavya. I now move to specific proposals. Under our first Kartavya, to accelerate and sustain economic growth, I propose interventions in 6 areas. 1. Scaling up manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. 2. Rejuvenating legacy industrial sectors. 3. Creating champion MSMEs. 4. Delivering a powerful push for infrastructure. 5. Ensuring long-term security and stability. And 6. Developing city economic regions. Scaling up of manufacturing in 7 strategic and frontier sectors. Biopharma Shakti, meaning biopharma strategy for health advancement through knowledge, technology, and innovation. India's disease burden is observed to be shifting towards non-communicable diseases like diabetes, cancer, and autoimmune disorders. Biologic medicines are key to longevity and quality of life at affordable costs. To develop India as a global biopharma manufacturing hub, I propose the Biopharma Shakti with an outlay of 10,000 crores over the next 5 years. This will build the ecosystem for domestic production of biologics and biosimilars. The strategy will include a biopharma-focused network with 3 new national institutes of pharmaceutical education and research, popularly known as NIPERS,
and upgrading 7 existing ones. It will also create a network of 1,000 accredited India clinical trials sites. We propose to strengthen the Central Drug Standard Control Organization to meet global standards and approve timeframes through and approval timeframes through a dedicated scientific review cadre and specialists. India's Semiconductor Mission 1.0 expanded India's semiconductor sector capabilities. Building on this, we will launch ISM 2.0 to produce equipment and materials, design full-stack Indian IP, and fortify supply chains. We will also focus on industry-led research and training centers to develop technology and skilled workforce. The Electronics Components Manufacturing Scheme, launched in April 2025 with an outlay of 22,919 crores, already has investment commitments at double the targets. We propose to increase the outlay to 40,000 crores to capitalize on this momentum. A scheme for rare earth permanent magnets was launched in 2025 November. We now propose to support the mineral-rich states of Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu to establish dedicated rare earth corridors to promote mining, processing, research and manufacturing. To enhance domestic chemical production and reduction import dependency and reduce import dependency, we will launch a scheme to support states in establishing 3 dedicated chemical parks through challenge route on a cluster-based plug-and-play model. Strong capital goods. Strong capital goods capability is a determinant of productivity and quality across different sectors. Towards building this capacity, I propose the following. High-tech tool rooms will be established by central public sector enterprises at 2 locations as digitally enabled automated service bureaus that locally design, test and manufacture high-precision components at scale and at lower cost. 2. A scheme for enhancement of construction and infrastructure equipments will be introduced to strengthen domestic manufacturing of high value and technologically advanced CIE. This can range from lifts in a multi-storied apartment or firefighting equipment in multiplexes, large or small, and to tunnel boring equipments for building metros and high-altitude roads. I also propose a scheme for container manufacturing to create a globally competitive container manufacturing ecosystem with a budgetary allocation of 10,000 crores over a 5-year period. For the labor-intensive जो फिस्कल डेफिसिट है वो 4.5 से कम होना चाहिए, जो कि हुआ है. उसके बावजूद आप देख एक्सपेंडिचर 20% बढ़ा है और डिफेंस एक्सपेंडिचर में स्पेसिफिकली ये देखिए कि वो इसलिए हो पाया क्योंकि आज 1 फरवरी से जो पान मसाला और टोबैको पे जो न्यू टैक्सेशन है वो नेशनल सिक्योरिटी सेस के फॉर्म में लगा है.
तो वहां से भी वो फंडिंग आई है जो स्पेसिफिकली डिफेंस के लिए आई है।